So final presentation. तो ये देखिए गेस्ट टेस्ट करते हुए। तो चक्षु बताएंगे कैसा टेस्ट है मिठड़ू का। देखिए गेस्ट को टेस्ट करते हुए। सो चक्षु टेस्ट बताएंगे कैसा टेस्ट है। देखिए पूरा आनंद लेते हुए मिठड़ू का। ये देखिए इन्होंने तो पूरा ही पीस उठा लिया है। देखिए फुल मजा लेते हुए। सो बताएंगे टेस्ट कैसा है। ये देखिए फुल मजा लेते हुए। पहले आप खाइए फिर हम खाएंगे। देखिए ये पहले दूसरों को सर्व करते हुए। चक्षु जी आप खाइए पहले। देखिए अब तो ये खड़े भी हो गए हैं। अब देखिए इन्होंने पूरा पीस ले लिया है। देखिए देखिए पूरा आनंद लेते हुए चक्षिता ठाकुर। सो चक्षिता बाय बाय कीजिए। प्लेट नहीं बेटा बाय बाय कीजिए। सबको बाय बाय कीजिए। देखिए आज ये बोल रहे हैं कि आज हमने बाय बाय करना ही नहीं है। चक्षिता बाय बाय। बाय बाय। अब अगली वीडियो में मिलेंगे हम। बाय बाय कर दो सबको। बाय बाय। वेलकम बैक एवरीवन। So I hope everyone is well on your home. So the guys, today I'm going to show you the one of the best recipe of the Himachal dish, which is called is michdu, and some people use in Himachali in word on this preparation is babru, but in my district Mandi, we can call is michdu. So the michdu basically we can prepare on the wedding function, we can prepare on the birthday party, when we go into the temple. So we can prepare, we can make it for babru for goats as a prasad. You know the Baba Balaknath. So when we go the Baba Balaknath, so basically we can prepare this preparation. या किसी भी मंदिर में हम जा रहे हैं, so we can prepare this preparation. So basically the michdu, the similar of the road Baba Balaknath. आप I think गए होंगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा बाबा जी का प्रसाद जो रोट होता है. So they will similar of the michdu, but in road we can use a very much semolina like सूजी. हम उस पर बहुत ज़्यादा यूज करते हैं. And we can use semolina very less amount of in this preparation. We can use but very less amount, not more than of the बाबा जी का रोट जो मिलता है उस पर ज़्यादा यूज करते हैं, इस पे हम कम करते हैं. So let's start. We can, without wasting time, we can sharing the recipe of the michdu. So we can use in michdu for wheat flour. So we can use in one large bowl of wheat flour. Approximate this is the 1 kg wheat flour, and one bowl semolina. The small bowl is semolina, जिसको सूजी बोलते हैं. And we can use जैगरी पाउडर. लाइक मैंने गुड़ का चूरा कर लिया था. So this is jaggery powder. We can use clarified butter like देसी घी for making of this dough. जब हम डो बनाएंगे तो थोड़ा सा इसमें हम clarified butter डालेंगे. While making the batter we can use milk. When you making the dough, so you can use in milk. So approximate we can use in one bowl for 1 kg. And the rest ingredients we can use kismis for as stuffing. We can use cashew nuts.
We can use almonds. We can use coconuts. मैंने नारियल को ग्रेट कर लिया था. For making a dough, we can use yeast for as a fermentation. क्योंकि इससे जो होगा वो हमारा जो डो होगा वो फ्लफी हो जाएगा. सो वी कैन यूज इन ड्राई ईस्ट. वी कैन आल्सो यूज बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा. आप उसका भी यूज़ कर सकते हो, पर मैं यहाँ पे ड्राई ईस्ट का यूज़ कर रहा हूँ. एंड फॉर डीप फ्राइंग वी कैन यूज सोयाबीन ऑयल. एंड यू कैन आल्सो यूज इन क्लैरिफाइड बटर लाइक देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं. So you can see this is the whole ingredients we required of making michadu. Yeah, we can call in babru because the some Himachali people like Bilaspur, we can call in this preparation is babru. But in my district, in district Mandi, we can call this michadu. So you can see again the whole ingredients. So let's start for the further process. So first we can prepare of the dough with the helping of wheat flour, and we can add semolina like suji. One bowl we can add semolina. Then we can add dry yeast for fermentation process. जिससे कि हमारा डो जो है वो फ्लफी हो जाएगा, फूल जाएगा इसको डालने से. Approximate we can use in 1 teaspoon. Then we can use jaggery powder, and you can also use sugar, but we can prepare mostly people use in jaggery. Good use करते हैं इस पे. Then we can add clarified butter like desi ghee, and now we can rub with the helping of your hands. So first we will mix all the ingredients. So guys, मैं एक चीज़ तो भूल ही गया था. For most flavoring agents we can use cardamom powder. मैंने cardamom का पाउडर बना लिया था. So we can use cardamom powder. So we can rub like this. You can see my hands. So you can rub whole the mixture like this. And after that we can add milk and little bit of water. So guys, you can see the after rubbing, so like we can do this type look. So after that we can add milk. So after rubbing we can add milk. And we can mix well properly, and we will make a batter. And then we can add kismis. We can add cashew nuts. We can add almonds. We can add coconuts, and we will make a simple dough. As you can see, so after making dough, so our dough is a very nice. So now we can keep the dough at least rest for 30 minutes. Now we can put a duster. So हम इसके आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे ऐसे ही. So that the our dough is a fermentation. जो हमने इस पे ईस्ट डाली थी वो उस पे काम करेगी, थोड़ा सा इसको फुला देगी. ठीक है. So we can rest the dough at least 30 minutes, and after that we can make a small bowl and we can fry deep frying method. I will show you the after 30 minutes for the further process. Now the 30 minutes is complete guys, so we can check our dough. So you can see the looks of dough is a very fluffy, so nice fluffing for our dough. So now the timing is for deep frying. So now we will make a small bowl of this dough.
So after making small ball, we can need this type of mold. Why we will giving the design to our Michudu. So guys, by the way, these are not available at the shop. To make this, you can give the advance order first the shop. And if you are from the Himachal, so then you will get this easily on any kind of shop in Himachal. So guys, if you not having this type of molds, so you can make a normal without design. Do not need for this type. But if you are making for in Himachali traditionally, so you can use in this type of molds. So let's start. I will show you the further process. So now we can take a dough and make a small ball. So you can see you can make this type of ball. So after that we can pinch. After making this dough we can pinch like this. थोड़ा सा इसको प्रेस करेंगे and after that we can put the ball into the wheat flour and after that we can keep the dough in this mold and after that press it like this. So now you can see the design of our Michudu like this and the both side like this. So now we can keep the another sides and we will do the same. Like this, and we can put here and we can press like this. So after that we can and you can see the nice design of our Michudu and we can keep in this side. So we will do the same for the all Michudu from the dough. After design guys, you can see I can giving the different design. मैंने इसको अलग अलग तरह के डिजाइन दिए हैं जो सांचा बताया था मैंने उससे. अगर आपके पास कोई सांचा नहीं है तो आप नॉर्मल भी बना सकते हैं विदाउट डिजाइन, पर हिमाचल में उसका यूज करते हैं इसको बनाते हुए. So you can see. So now the timing is deep frying. So let's start. Now switch on the gas first. Then put the wok. Then we can add soybean oil. You can also use clarified butter like देसी घी. आप देसी घी का भी यूज कर सकते हो. So now we can use a very large amount of oil. क्योंकि हमें डीप फ्राई करना है तो हम थोड़ा ज़्यादा ऑयल लेंगे. So guys, first heat the oil. Approximate is first we will maintain the temperature of oil at least 183 degrees Celsius. So now we can just wait when our oil is proper getting hot. So make sure guys, first you can heat the oil. When the oil is getting a proper hot, approximate is 183 degrees Celsius. So then you keep the gas flame is slow. If you cook in your Michudu in a very high flame, so your Michudu is cooked outside, not inside. So inside आपको लगेगा कि ये कच्चा है और बाहर से वो जल जाएगा, ठीक है? So when you're making a deep frying method, you can use in deep frying method. So make sure first you can maintain the temperature of oil. So when the oil is getting hot, then you keep the gas flame is slow. Whatever you want to deep fry, you can add into the directly. Like Michudu, so we can put into the Michudu. And we will cook till when the color is a light brown. Not a dark brown, we can use in a light brown. ऐसा नहीं है कि उसको ज़्यादा ही लाइट ब्राउन डार्क करना है, हमें लाइट ब्राउन चाहिए. अगर आप उसको हाई फ्लेम में कुक करते हो तो जो आपका मिचड़ू है वो बाहर से ही कुक होगा, अंदर से वो कच्चा होगा. तो मेक श्योर सबसे पहले आप ऑयल को गर्म कर ले.
जब आपका ऑयल गर्म हो जाएगा अच्छे से तो उसकी गैस फ्लेम कम कर दें और उसके बाद अपना मिचड़ू डाल दें पर्टिकुलर टाइम के लिए, जबकि आपका मिचड़ू एक ब्राउन सा कलर में आ जाएगा, लाइट ब्राउन कलर में, उसके बाद उसको निकाल लेंगे। ओके, सो वी कैन सी, so now we can check our oil. Now the oil is getting out. Just I will check. I will put a little bit of front. So you can see the oil is getting out. So now the keep the gas flame is slow. And now we will put the michuru directly into the oil. And we will cook till when the color is a light brown. Do not extra burn, and make sure your gas flame is slow. If your gas flame is high, so your michuru is cooked via the outside, not inside. तो जो आपका मिठड़ू है वो बाहर से ही कुक होगा और अंदर से कच्चा होगा। Now we can turn the another side. You can see the nice color. You can turn with the helping of perforated spoon. So now we can remove the michdu with the helping of perforated spoon. Guys, you can see the nice color of our michdu. You can see. Now we can keep the another side. We will keep for the another sides. You can see, guys, the nice color for our michdu. We will put to the another sides. So now, guys, we will do the same for the rest michdu. Again we will put and we will cook till when the color is a light brown. We will do the same thing. Frying, you can see the our michdu how does it look like. देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं फ्राई करने के बाद। So now the timing is final presentation of michdu. So this is the final presentation of michdu. You can serve along with warm milk. Either you can serve along with tea, but I like it milk, so we can serve along with milk. So you can see the final presentation of michdu. So guys, I hope you well understood by watching this recipe, and you can serve along with warm milk या tea. जिनको दूध के साथ पसंद है वो दूध के साथ ले सकते हैं और जिनको चाय के साथ है चाय के साथ इसको सर्व कर सकते हैं. So I like it milk, so we can serve with milk. So I hope you well understood this recipe. So now the final presentation, you know very well our special guest. So we can serve now this presentation of the special guest. So final presentation. तो ये देखिए गेस्ट टेस्ट करते हुए, तो चक्षु बताएंगे कैसा टेस्ट है मिठड़ू का। देखिए गेस्ट को टेस्ट करते हुए, सो चक्षु टेस्ट बताएंगे कैसा टेस्ट है। देखिए पूरा आनंद लेते हुए
मिठड़ू का ये देखिए, इन्होंने तो पूरा ही पीस उठा लिया है। देखिए फुल मजा लेते हुए। सो बताएंगे टेस्ट कैसा है। ये देखिए फुल मजा लेते हुए। पहले आप खाइए, पहले आप खाइए फिर हम खाएंगे। देखिए ये पहले दूसरों को सर्व करते हुए। चक्षु जी आप खाइए पहले। देखिए अब तो ये खड़े भी हो गए हैं। अब देखिए इन्होंने पूरा पीस ले लिया है। देखिए देखिए पूरा आनंद लेते हुए चक्षिता ठाकुर। सो चक्षिता बाय बाय कीजिए। प्लेट नहीं बेटा, बाय बाय कीजिए, सबको बाय बाय कीजिए। देखिए आज ये बोल रहे हैं कि आज हमने बाय बाय करना ही नहीं है। चक्षिता बाय बाय, बाय बाय। अब अगली वीडियो में मिलेंगे हम। बाय बाय कर दो सबको, बाय बाय।